existentialism, structuralism. These are the philosophy. Okay, come to the main point, introduction to philosophy. What is philosophy? See, the word philosophy, it involves two Greek words, philo meaning love, and sophia meaning knowledge. Thus, literally speaking, philosophy means love of wisdom. Love of wisdom, because human being have a creative mind. Huh? So man is a rational animal, I mean, highest rational animal of the world. So we have a judgment capacity. We can give a idea. We can give it new structure. We can give a new our thinkings, our uh, concept, new ways, new directions, like that. Desire for knowledge arises from this rational nature of man. Philosophy is an attempt to satisfy this very reasonable desire. Philosophy signifies a natural and necessary urge in human beings to know themselves and world in which they live, move, and have their being. It is impossible for man to live without a philosophy. The choice is not between metaphysics and no metaphysics. It is between a good metaphysic and a bad metaphysic. So what is metaphysics? Metaphysics, it requires into the nature and ultimate significance of the universe. Okay, next definition. According to Plato, फिलोसफी इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. आप किस तरीके से ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, वो प्रोसेस को ही किया जाता है दर्शन, फिलोसफी. एक्विजिशन, योर प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. अब जो चीज़ के बारे में आपको जानकारी है, लेकिन वो रिलायबल होना है, वैलिड होना है, ऑथेंटिक होना है, वो जो ज्ञान हासिल करते हैं वही को दर्शन किया जाता है, या नॉलेज या फिलोसफी कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू जॉन गेव हेवन, philosophy is concerned with that which is in contrast with that which seems to be. जो हम क्या करते हैं, फील कर सकता है, जो हम क्या करते हैं, फील कर सकता है ना. इट्स एम टू बी रिवील द रियलिटी which underlines appearance. और हमको क्या है, जो इच्छाएं है, एम है, ठीक है, उसका रियलिटी जो है, रियलिटी जो निकालता है, उसका जो रियलिटी निकालता है, वही क्या है, दर्शन या फिलोसफी है. नेचर ऑफ फिलोसफी, इसका प्रकृति क्या है, ये फिलोसफी का नेचर क्या है. तो पहले हम लोग तो जान चुका है कि ये क्या है, लव ऑफ विजडम. दर्शन क्या क्या करते हैं, ज्ञान को, जो ज्ञान हासिल करने के लिए उसको पसंद करते हैं, ज्ञान हासिल करना पसंद करता है, ज्ञान को
बढ़ाना चाहता है, उसका आगे बढ़ना चाहता है, वो क्या है, इसका नेचर है रैशनल जजमेंट। वो कोई भी जजमेंट है उसको क्या कि राइट एंड रॉन्ग जजमेंट करते हैं, और दोनों डिटर्मिनेशन करके जो जजमेंट होता है वो रैशनल, जिसके पास क्या होता है, लॉजिक होता है ना। इंक्वायर्स इनटू द नेचर ऑफ मैटर, हम लोग को इंक्वायरी करना है क्या मैटर, नेचर का जो मैटर है, मेटरलिस्टिक ये नेचर जो है, इसको हमको इंक्वायरी करना है, जानकारी निकालना है। वो क्या है, फिलोसफी का नेचर है। फाइंडिंग ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, हम लोग को विज्ञान सम्मत, मतलब क्या, साइंस, साइंटिफिक होना है। साइंटिफिक नॉलेज को हम लोग को फाइंडिंग करना है, वो दर्शन चाहता है। और माइंड विथ लॉजिकल थिंकिंग, हमारे जो मन है उसको, जो भावनाएं हम लोग को, वो लॉजिकल होना है, जुक्ति के साथ होना है, आर्गुमेंट के साथ होना है, लॉजिकल होना है। नेक्स्ट, डील विथ हाइस्ट गुड, राइट्स, ड्यूटीज एंड वर्चुअस। डील किसके साथ करना है, हाइस्ट गुड, जो एब्सोल्यूट गुड है, अच्छा है, जो राइट है, ड्यूटीज, उसके साथ क्या ना, ड्यूटी भी होना है, एक्यूरेट एंड सत्य को निकालना है, भाषु, ओके। लॉजिकल थॉट एंड रैशनल रिफ्लेक्शन, आपको चिंता लॉजिकल होना है और रैशनली रिफ्लेक्शन होना है। जो रिफ्लेक्शन होगा वो रैशनल रिफ्लेक्शन होना है। और सार्स नॉलेज ऑफ यूनिवर्स, और ये कायनात की, चार आलम की क्या है, आपको नॉलेज को सर्च करना है। नॉलेज ऑफ इटर्नल, आपका जो इटर्नल नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो भी आपको जानना है। जानकारी वो भी क्या है, नेचर ऑफ दर्शन का, फिलोसफी का नेचर है, भाष्य ऑफ नेचर। ये नेचर का जो क्या है, सत्य क्या है, रियलिटी क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, इसको आपको जानना ही फिलोसफी का नेचर है। ओके, नेक्स्ट आइए, स्कोप ऑफ फिलोसफी। स्कोप ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में दर्शन क्या क्या कैसे रिलेटेड है, ये आपको जानना है। उसका जो मेन है वो पहले आप देख रहे हैं, एम्स एंड आइडियल्स ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। एम्स क्या होता है, जो आपको लक्ष्य होता है, जो आपको उसका आइडियल्स ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की जो दर्शन है वो क्या होना है, आइडियल होना है, ठीक है। सो education critically evaluates the different aims and ideals of education. These aims and ideals have been propagated by various philosophers in different times. They are character character building, man making, harmonious human development, preparation for adult life, development of citizenship, achieving social national integration, this। तो ये लोग क्या करता है, जैसा हर फिलोसोफर ने अपना अपना मतदान से, फिलोसफी से क्या करता है, क्या करना, कैरेक्टर बिल्डिंग करना चाहते हैं, मैन मेकिंग करना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, हार्मोनी
एक दूसरे को क्या कहते हैं, को जो यूनिटी मेकिंग करना चाहते हैं। हाँ? उसके बाद क्या करना चाहते हैं, प्रिपरेशन फॉर एडल्ट लाइफ को बनाना चाहते हैं, कैसे एडल्ट लाइफ हैप्पी रहेगा, किस तरह से एडल्ट को अच्छा से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, उसको माइंड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंगेज किया जा सकता है, उसके बारे में। डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, अचीविंग सोशल नेशनल इंटीग्रेशन, और सोशली सामाजिक तौर पे, और नेशनल इंटीग्रेशन जो क्या क्या कहते हैं, जातियों एकता को बनाना चाहते हैं, यूनिटी को मेकिंग करना चाहते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, ए फिलोसॉफिकल पिक्चर ऑफ human nature is a result of the synthesis of the facts brought from all the human science with the values discussed in different normative sciences. The philosophical picture, therefore, is more broad compared to the picture of man drawn by biology, sociology, psychology, economics, anthropology, and other human sciences. Next, educational value. Educational value is typically a philosophical subject since it is more abstract, integral, and universal. And next is the theory of knowledge. Education is related to knowledge. It is determined by the source, limits, criteria, and means of knowledge. Relationship next. Relationships of educations and various areas of national components of the system of education. Okay, next. The branches of philosophy. What are the branches of philosophy? Number one is the metaphysics. What is metaphysics? Metaphysics means it's inquiries into the nature of ultimate significance of the universe. Okay? So its theme, the concerned with explaining rationally and comprehensively the nature of reality, is concerned with the nature of being, related to education. What is what are the relevance with the education? The school curriculum is based on what we know of reality. हम रियलिटी के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट इज द रियलिटी, वही क्या होता है, मेटाफिजिक्स। रियलिटी के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में हम लोग को जानना है। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी is in is investigates the nature of knowledge and the process of knowing. Simply, we can consider is a knowledge. Epistemology search knowledge, on focus on knowledge. What is true and how we know what we know. हम क्या जानते हैं और किसके लिए क्या जानना चाहते हैं. Studies ways of knowing based on authority, knowing based on divine uh, uh, revelation, knowing based on empiricism, experience, like that, and knowing based on analysis, knowing based on reason and logical analysis, knowing based on intuitions. Axiology, what is axiology? Axiology means concerned with values, moral values, ethical values. Yes, values related to the education go beyond concerned about the quantity of what is
taught to consider the quality of life that becomes the possible because of what a person knows. Ethics. Ethics क्या होता है? It deals with the problems of right conduct. Ethics focus on the what is good or wrong, what is good or bad, or what is good and evil, right and wrong, just and unjust. In education, teacher must face the ethical dilemmas that are a part of classroom life. Ath- uh, Another is the aesthetic. Aesthetic, it attempts to determine the nature of beauty and the criteria of artistic judgment. Easily, you can say aesthetics means nature of beauty. Relevance to education, how you address aesthetics in all areas of the curriculum. Last one is logic. Logic, it is concerned with the laws of valid reasoning, deals with the process or reasoning and identifies rules that will enable the thinker to the consider. Another relevance to education is consider the rule of discovery inductive teaching in your classroom. Another have ontology, that means the reality, phenomenology, our experiences, rationalism, life based on reason and evidence, empiricism, science emphasized. These are the. So, if we discuss about the concept of philosophy, the Western concept and Indian concept, the Western concept is a vast concept of philosophy because philosophy derives from the Greek word. So, Greek concept of philosophy, we need to study the Greek concept of study, and if we study about the Indian philosophy, then we need to discuss about the Vedic philosophy, um, Sankhya philosophy, Buddhist philosophy, Jain philosophy. hmm? These are the philosophy we need to discuss. So we get a concept about the philosophy is a thinking. Philosophy is related with your ideas, reality, nature of existence, and it is find a valid reason, and it is find rational judgment. It is find a absolute. It is find a new ideas and creative ability of human being. So it is a philosophy of human being. It is attached with or coherent with human life. Okay, so I hope it will helpful for you. So thank you so very much.